we have started homogeneous catalysis, and there are different mechanisms which proceed based upon the homogeneous catalysis. One of these include alkene metathesis reaction. Metathesis reaction, they are actually exchange reaction in which the exchange of ion between two reactant occurs. Like in the example, there are two alkenes which are reacted together to produce the cross alkylated product, like R1 and R2 are over here. When they react with this R3, R4 substrate, so you are seeing the product produced is R1 is with the R3 substrate and R2 is with R4. So you can perform these reactions in alkene metathesis reactions. There are different types of the metathesis reaction, like ring closing metathesis in which the ring closes, the cross metathesis in which the cross um, addition occurs to produce the product, and then there is ring opening metathesis in which the ring opens uh, in which the ring opens to produce the product, and then E9 metathesis in which the E9 is ring closed to produce the product, and then ring opening metathesis polymerization. The ring is opening along with polymerization reaction, and then acyclic diene metathesis polymerization in which the acyclic the product, there is the cyclic product that is converted to polymer, but here the acyclic product is converted to the polymer. So the mechanism of the alkene metathesis, this was proposed by a scientist named Chauvin. So this mechanism is also called Chauvin mechanism of alkene metathesis. After its first proponent, Louis Chauvin of the French Petroleum Institute, Chauvin's proposal of this mechanism shortly after the discovery of metal alkylidene by Dick Schrock at DuPont earned him a Nobel Prize in 2005. इस रिएक्शन पे ये जो श्रॉक है, इसने इस पे नोबेल प्राइज जीता था. This is also called Grubbs reactions as well. Chauvin and Schrock shared the prize with the Bob Grubbs, who made it possible for the reaction to be adapted easily to the synthesis of complex molecules such as pharmaceuticals. So this reaction is also called Grubbs catalysis. So alkene metathesis और Grubbs catalysis में Chauvin mechanism जो है ये proceed होता है. Like you may see, there are two types of the alkenes which are reacting together, but here one bond is shifted over here and the other bond is shifted over here to produce the cyclic intermediate product. Now the bond is proceeding, this is dissociated accordingly जिस तरीके से ये बने हैं. So ये dissociation जब हो जाती है, so you are seeing the product like this one. Here the R2 is linked with the LNM and the R3 is linked with the R1. So this mechanism was proposed by Chauvin, and Grubb developed the catalyst for this. So this is called Grubbs catalysis. Alkene metathesis was first purported in the 1950 with poorly defined mixtures of reagents such as WCl6, Bu4 tetrabutyl tin, and molybdenum oxide silica, being used to bring about a number of different reactions. मतलब यही रिएक्शन होता था, लेकिन कैटलिस्ट ये थे. ये अगर इनको देख लें तो ये ज़्यादातर heterogeneous catalyst से belong करते थे, being used to bring about a number of different reactions. In recent years, a number of newer catalysts have been introduced, and the development of the well-defined ruthenium alkylidene compound by Grubbs in 1992, now known as Grubbs catalyst, was of seminal importance. 1992 में ये scientist ने Grubbs ने इस पे काम किया, and he developed the catalyst. This is called Grubbs catalyst, which is ruthenium complex, organometallic complex है.
This is bonded to two chloride ions and cyclohexyl ट्राईसाइक्लोहेक्सेन फॉस्फीन के साथ दो साइड से इसके साथ लिंक्ड होता है और एक साइड से ये अल्कीन के साथ लिंक हो सकता है. दिस इज so this catalyst is also called first generation Grubbs catalyst because Grubbs catalyst में further improvement हुई है, तो इसकी वजह से इसको first generation Grubbs catalyst भी कहा जाता है. Now the second generation catalyst has the same uses in organic synthesis as the first generation catalyst. इसके बाद भी catalyst development आई है क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब पहले तो मेटाथिसिस रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है कि मतलब अल्कीन जो बनते हैं तो वो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए. तो जब स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसके लिए फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है. सो फॉर द सेकंड फॉर द स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेकंड जनरेशन ग्रब कैटलिस्ट वाज यूज्ड. और सेकंड जनरेशन ग्रब कैटलिस्ट जो है इसमें फर्स्ट जनरेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है. इसमें वही ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन लगा हुआ है एक साइड पे, लेकिन दूसरे साइड पे इसकी ये फॉस्फीन की जगह हमने कार्बीन लिगेंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कार्बीन इसको कहते हैं. ये जो मॉइटी है which is attached, this is called N-heterocyclic carbene. So this has been bonded to the ruthenium to produce the catalyst which is called second generation Grubbs catalyst. अगर इसको देख लें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीरियो रिजिडिटी इसमें मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है ये और जो ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन है इसमें रिजिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये फ्लेक्सिबल लिगेंड है. वेयर इज द ग्रब द कार्बीन लिगेंड, दिस इज नॉट सो मच, हम उसको कहते हैं कि इसमें रिजिड नहीं है, ये फिक्स्ड होता है. तो इसलिए ये जब कैटलिस्ट करता है तो ये एक साइड पे एडिशन कर सकता है, दूसरी साइड पे नहीं करता. तो इसलिए आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब स्टीरियो वाइज आप अगर सिस प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी बनते हैं, ट्रांस बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं. तो इस तरीके से एस और सिन और वो जो हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो वो प्रोडक्ट ये बना सकता है. दिस कैटलिस्ट इज स्टेबल टुवर्ड मॉइस्चर एंड एयर, दिस इज ईजियर टू हैंडल इन द लैब. और इसके अलावा ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, लेकिन दूसरी बात इसमें ये है कि ये मॉइस्चर और एयर के लिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. वो जो फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट था वो थोड़ा मॉइस्चर और एयर सेंसिटिव कैटलिस्ट है, तो उसको हैंडलिंग जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है. इसकी हैंडलिंग आसान है बिकॉज इट इज़ नॉट सो मच एयर एंड मॉइस्चर सेंसिटिव. एप्लीकेशंस में ग्रब कैटलिस्ट में दिस इज़ यूज्ड फॉर द ओलेफिन मेटाथिसिस. हम इसे मेटाथिसिस रिएक्शंस करते हैं, बहुत सारी मेटाथिसिस रिएक्शंस आप लोगों ने देख ली हैं. इट इज़ मेनली अप्लाइड टू फाइन केमिकल सिंथेसिस. अगर फाइन केमिकल्स भी बनाते हैं तो इसी के थ्रू बनाते हैं. लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ओलेफिन मेटाथिसिस ऑलमोस्ट ऑलवेज एम्प्लॉय हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और एल डिफाइंड सिस्टम बेस्ड ऑन रुथेनियम ट्राइक्लोराइड. ठीक है, तो ये इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसको ग्रब कैटलिस्ट इसको कहते हैं. एंड बेस्ड अपॉन दिस its importance, the scientists were awarded the Nobel Prize. Next reaction, this is hydrogenation reaction. This is also very important reaction. Addition of hydrogen to organic substrate, alkene or alkyne, is called hydrogenation reaction. Hydrogenation reactions are carried out by Wilkinson catalyst. Wilkinson ये जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो हैं ये हम कैरी आउट करते हैं यूजिंग कैटलिस्ट कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो वैसे जनरली होते भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, लाइक निकल रैनी निकल एंड प्लेटिनियम के उसमें, तो वो प्रेजेंस में हम करते हैं मेटालिक रैनी निकल
या प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, तो वो जो है वो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं। अगर होमोजीनियस कैटालिसिस आप करते हैं तो होमोजीनियस कैटालिसिस इज मच मोर स्पेसिफिक, तो इस वजह से होमोजीनियस कैटालिसिस जो है इसका विल्किंसन कैटलिस्ट के कैटालिसिस के नाम से पहचाना जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड Wilkinson's hydrogenation reaction. Hydrogenation reactions are carried out by Wilkinson's catalyst. Wilkinson catalyst is the common name for chlorido triphenyl phosphine rhodium 1. ये complex है, इसका नाम जो है Wilkinson catalyst होता है, and this is organometallic in nature. A coordination complex of rhodium with the formula RHCl PPH3 whole 3 pH. pH जो है ये सॉरी pH नहीं है, इसके साथ pH का मतलब है phenyl group. It is a red brown colored solid that is soluble in hydrocarbon solvents such as benzene and more so in tetrahydrofuran or chlorinated solvents such as dichloromethane. Organic catalyst है तो organic solvents में soluble है. The compound is widely used as a catalyst for hydrogenation of alkenes. It is named after chemist and Nobel laureate Sir Geoffrey Wilkinson, who first popularized its use. ये भी मतलब हाइड्रोजनेशन कैटालिसिस भी, इस पे भी नोबेल प्राइज मिला है टू विल्किंसन. So this is named after him because he discovered it. Structurally, rhodium is there. There are 3 triphenyl phosphine ligands attached to it and 1 chloride. Wilkinson's catalyst is usually obtained by treating rhodium 3 chloride hydrate with an excess of triphenyl phosphine in refluxing ethanol. Triphenyl phosphine serve as a 2-electron reducing agent that oxidizes itself from oxidation state 3 to 5. In the synthesis, 3 equivalents of triphenyl phosphine become ligands in the product, while the 4th reduces rhodium 3 to rhodium 1. मतलब हम rhodium 3 यूज करते हैं तो एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है rhodium 3 को rhodium 1 में कन्वर्ट करता है, और बाकी जो 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है वो एज ए लिगेंड काम करते हैं. तो अगर आप देखें rhodium trichloride H2O whole 3, this is reacting with 4 PPH3 to produce rhodium PPH3 whole 3. This is the complex Wilkinson's catalyst, and PPH3O when this is reduced, ये जो है oxidation state से 3 से 5 में convert होता है. So this is converted to oxide plus 2HCl plus 2H2O. So it is a complex of rhodium 1, a D8 transition metal ion. ठीक है, rhodium 1 का complex है और वो D8 system है. From the perspective of the 18 electron rule, the 4 ligand each provides 2 electrons for a total of 16 electrons. अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो 16 आते हैं. 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो 4 जो आप उसको 2 ईच, हर एक लिगेंड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 8 वो आ जाते हैं, और D8 सिस्टम इसका है तो दिस इज 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स. कैटालिटिक साइकिल में this is the catalyst rhodium at the top. This is the Wilkinson's catalyst PPH3, PPH3, PPH3 and Cl. In the first step, 1 PPH3 is lost to produce this substrate. ठीक है, PPH3 2 अटैच होते हैं और एक क्लोराइड, एक वैकेंट साइट रह जाता है. So this vacant site, when this is produced, this can dimerize to produce this complex. अगर मतलब H2 अवेलेबल ना हो तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर H2 और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, so this will produce the octahedral complex like this one. See this one, this is producing trigonal bipyramidal structure first when reacting with H2. So this is produced. अगर PPH3 आ जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है.
लेकिन अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आ जाए इसके साथ तो वो उसके साथ अक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा थ्रू पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये साइड रिएक्शंस हैं, जो ये ब्लर नजर आ रहे हैं आपको, ये साइड रिएक्शंस हैं। So this is producing pi complexation with the organic alkene. So when the sigma bond formation occur, one of the hydrogen, this is transferred toward the alkene to produce this product, and sigma bonding occurs. So at the end, the organic substrate is dissociated, resuming back by accepting this hydrogen from the rhodium complex. This is resumed again. लेकिन साइड रिएक्शंस में इस स्टेप में ये कहते हैं कि ये आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट भी बन सकता है कि ये जो है ये इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं, रीअरेंज होके इस तरीके का प्रोडक्ट भी बन सकता है। मतलब ये टर्मिनल अटैचमेंट है तो ये टर्मिनल नहीं है। सो दिस इज कन्वर्टेड टू दिस प्रोडक्ट। तो ये साइड रिएक्शंस हैं, लेकिन ये साइड रिएक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होते जिस तरीके से ये जो मेन रिएक्शन है ये हो रहा होता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस इज 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ये जो है ये पे 16 नहीं है, ये 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगेन अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो दिस इज 16 और 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, देन अगेन 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, देन so on and so forth. ये जो है अगर इसमें ओवरऑल आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम काउंट करें, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो दिस इज converted from 16 to 14 or 14 to 16 or 16 to 18 and 18 to 16. तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कैटालिसिस जो विल्किंसन कैटलिस्ट है या जनरली कैटालिटिक साइकिल होता है, उसमें जनरली इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से रोल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक स्टेट में और दूसरी स्टेट में स्विच करते हैं। सो विल्किंसन कैटलिस्ट this proceeds to produce the organic substrate naturally. Side reactions होते हैं लेकिन those reactions can be ignored. So this is all about Wilkinson's catalyst and hydrogenation reactions. If you people have any question regarding today's topic, you may ask.